पाक और जलाली नाम में जो नाम सब नामों से बुलंदतर और बालानतार नाम है, और आसमान तले आदमी को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से नजात हो। उसी के मुबारक नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और ये प्रोग्राम जो है प्रेज एंड पावर मिनिस्ट्री न्यूपोर्ट चर्च की तरफ से है। आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं तो ज़रूर हमें भेजिएगा, और अगर आपके पास हमारे टेलीफोन नंबर्स नहीं है तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको अपने टेलीफोन नंबर्स दें ताकि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हम तक पहुंच सकें। तो इबादत के शुरू में हम खुदावंद से दुआ करते हैं, उसकी हजूरी के लिए आए हम झुके और अपने खालिक खुदावंद के हजूर सरलगू हों। कादर मुतलक खुदा, मेहरबान बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हम तेरी सिताइश और बुजुर्गी बयान करते हैं क्योंकि तू ही वाहिद है जो सिताइश और बुजुर्गी के लायक है। तू जैसा कोई दूसरा नहीं जिसके सामने झुका जाए। कदूस बाप, इस वक्त हमारी इबादत में तू हमारे साथ शरीक हो। तेरी हजूरी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद, और अपना तख्त हमारे दरमियान लगा। जहां जहां आज लोग तुझे पुकार रहे हैं, तेरी परस्तिश कर रहे हैं, तो उनके दरमियान हाजिर हो और खुदावंद सबको अपनी बरकतों और रहमतों से माला माल करके भेजना। तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरे लोग इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर हैं और तुझसे मदद मांगते हैं कि हम नहीं बल्कि तू नजर आए और हमारा बोलना, बात करना सब तेरे हजूर मकबूल ठहरे। खुदावंद पाक खुदा, तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इस सेशन को तेरी सुपुर्दारी में करती हूँ, आमीन। मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ूंगी ज़बूर 42। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। इस ज़बूर का जो अनवान देने वालों ने लिखा है, जला वतन आदमी की पुकार। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। हाय मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसकी नजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आए मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन और हरमोन को कोहे मिस्फा पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा तो मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता था। मेरे मुखालिफों की मलामत को या मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है।
आए मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आमीन आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे और ज़बूर। इस वक्त पहले हम इस सेगमेंट में दुआ को और वर्शिप को मिला के, क्योंकि हमारा दुआ का एक सेशन हमेशा होता है, तो दुआ को और वर्शिप को मिला के तो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं। पास्टर महबूब इलाही। Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ बारिक। Hallelujah. ज़बूर 139 गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर, हजूरी तेरी तो छुप। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं नसान, हजूरी तेरी तो छुप के नसान, मैं जड़ होते हैं तो मैं जड़ जावा जैस माना होते हैं तो बचावा बेसरा पाताल दे विच होते हैं तू बचावा बेसरा पाताल दे विच होते हैं तू समुंदरों पार जाए उदरा सुबह दे पंखा फैला समुंदरों पार जा उदरा सुबह दे खानू फैलाते ओठे भी तेरा हद मैनू यार रावे खावेगा ते ओठे भी तेरा हद मैनू यार रावे खावेगा खुदाया तू करेगा दस आप मेरी खुदाया तू करेगा आप मेरी तेरा सजायो से पताल विच हो बे मदद मेरी तेरा हाथ सजायो से पताल विच हो बे मदद मेरी जे मैं
رب میرا گن بھاوے گا جے گاج مینو گب ہنیرا گن جھماوے گا میرے گردے ہنیرا دونوں چانن ہناوے گا میرے گردے ہنیرا دونوں چانن ہناوے گا نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا گب ہنیرا نہیں ہے سامنے تیرے ہنیرا گب ہنیرا ہنیری رات تیرے سامنے وانگ جاننے ہنیری رات تیرے سامنے وانگ جاننے خدایا تیری روحوں میں بھلا نس کے در جاواں حضوری تیری تو چھپ کے میں طرف نسان. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. آئیے ہم دعا میں چلتے ہیں. سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنے مائک کھولیں. ہم سب مل کر خدا کی تعریف کریں گے, اس کی ورشپ کریں گے اور اس کی بندگی کریں گے. ہاللیلویا. آوازوں کو خدا تیرا شکر کرتے ہیں دن کے لیے شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم سب مل کر تیرے ہم سب تیری بندگی کے لیے تیری پیشکش کے لیے سجدہ کرنے کے لیے خدا کوئی ایسا نام نہیں ہے خدا جس کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں. خدا تیری بدران شفقت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. پوری نہ آ سکے مناجاتوں کو اور اپنی کیوں کو تیرے پاس لا سکیں. تو ان تمام اپنے سامنے کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دل کو ہم تیری آواز کو تیری اس مرضی کو جان سکیں جو کہ خداوند تو ہم سے چاہتا ہے. خداوند اپنے دلوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے دلوں پر اپنے پاک کلام کی نور پر ہمارے دلوں کو کھول تاکہ آج جو بھی تیرے کلام ہماری زندگی میں جو بھی تیرا کلام ہماری زندگیوں پہ گہرا اثر کرے خداوند تمہاری زندگیوں کو تبدیل خدا باپ دعا کرتا ہوں خداوند تیرے بندہ کے لیے جو کہ خداوند آج تیرے کلام کو ہم تک پہنچانے والی ہیں اپنے پاک روح سے مور کر میں تیرے پاک خون میں چھپاتا ہوں بھی آج وہ خداوند تیرا کلام پیش کرے وہ روح اور سچائی سے ہو ہماری عین ضرورتوں کے مطابق ہو خداوند تاکہ ہم تیری آواز کو خداوند تیرے پاک کلام کو سنیں اپنی دلوں میں جگہ دیں. خداوند تو ہمیں ہر طرح کی خوف کی روح ہم میں سے جاتی رہے. تو نے ہمیں خوف کی نہیں بلکہ
تیری کی روٹی بنا کے خدا ہے اور دیر بنا تاکہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم تیرے ساتھ وہ ناتا رشتہ پیدا کریں جو کہ باپ اور بچے کو بہترین خداوند ہم تیری پاک مرضی کو پورا کر سکیں اگر جماعت کے ساتھ ہو خداوند تو ایک ایک کو تیرے پاک خون میں چھوڑ جن لوگ خداوند فیس بک کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں خداوند تمام پر ضروریات زندگی کو پورا کر خداوند چھو اور اپنے پاک کو سمور کر تاکہ وہ خداوند بہت زیادہ کلام سے سیکھیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں کلام جو کہ خداوند بند بند اور گزرنے میں قادر ہے خداوند تیرا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے خداوند ہم تیرا شکر ہو خداوند خداوند ان لوگوں کے جو کہ جنہوں نے ابھی تک خداوند تجھے قبول نہیں کیا خداوند شیطان نے اپنے جھوٹ خداوند باندھ رکھا ہے خداوند تیرے یسوع نام سے ان تمام جوئے ہم یسوع مسیح کے میں آئے جو کہ نرم لائن ہے خداوند نے کہا میرا جوا نرم اور ملائم میرے خداوند ہم تیرا شکر خداوند جب اپنی بادشاہ ہاتھ والوں سے کہہ گیا میرے باپ کو مبارک لو راس حاصل کرو جو ازل سے تمہارے واسطے تیار کیا خداوند میں اپنی طرف سے کہے گا تاکہ خداوند ہم خدا کے غضب سے خداوند بخشتے کہ ہم تیری سلیت تیری قربت میں تجھے پہچان اپنی زندگیاں تجھے دیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تیرے کلام کے مطابق نظر جماعت کے ساتھ ایک ایک کو اپنی برکات یسوع نام سے تیرے یسوع نام سے تاکہ خداوند تمام تر معمولے جو ہماری زندگی ہے نام کو جلال ملے خداوند تیرے نام سے نام کی تمجید ہو خداوند ہم میں سے ہر ایک ہم تیرا شکر باقی وقت میں تمہارا حامی ناصر آج ہمارا پرستش کرنا تیری حضور میں گانا بجانا اور تیری حضور میں ترنت جھکنا جو ہے تیرے سارے جان لو کر دایا میری چنگیاں دینو چنگیاں تیری
मरनो खुशी बख्श बख्शदा है तेरी बख्श खुशी बख्शदा है तू आँख है मेरी जान ओ गांदे वांगर तेनू जोर दे ओ गांदे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानियों कर आए ओ तेरी जवानियों कर बने आए दुआ आँख है मेरी जान हाँ सब दुखियां पिया सब दुखियां गंगा दे नया लाए सच्ची कर खुदा नया लाए सच्ची कर खुदा मेरी बेगाया है अपना बेगाया है अपना बनी सराई गए मेरी जानू बारे देओ सदाई वे सदा रे जान हालेलुया हो हालेलुया 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 इंता मामा मामा यालारा zondo bobo hallelujah 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 just feel the heavy presence of God right now in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. It doesn't matter wherever you're sitting in your house, wherever you're watching, the Holy Spirit is with you right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ उसका तब है उसकी हो जाती है पाक खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हालेलुया तेरे पाक रूह की मामूरी के लिए हालेलुया तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं हालेलुया तू यहाँ पर भी मौजूद है और जो लोग हमें वॉच करते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद हैं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं दरमियान मौजूद हैं हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तारीफ बड़ी बरकत दे खुदा तो कान लग खुदा अपनी बंदी को जो खुदा तेरा काम हालेलुया हालेलुया ओ तेरे पास हालेलुया हालेलुया ओ मामा तुम्हारे दिलों को पाक कर तमाम दोस्तों के लिए दुआ करें जिनको दुआ की जरूरत है आपको याद होगा कि बहुत सारे दोस्त आपको दुआ के लिए दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हम आपके लिए दुआ करते हैं जो खुदा तेरे नाम से सताए जा रहे हैं खुदा तेरे नाम से सताए जा रहे हैं उनको याद करें और उनके नाम लेकर खुदा की हुजूरी में उनको लिफ्ट अप करें उनके लिए दुआ करें हालेलुया हालेलुया सवालात में है जेलों में है तमाम को ईमान
انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ ان کے لیے دعا جب تیرے کیجیے. کلام کو چھپایا جاتا ہے تو ہاللویہ. تیرا کلام اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. ان تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خاص کر دعا کرتا ہوں طبیعت گل کے لیے کہ خدا فیس تو بک اپنی پہ مرضی کے میسج ساتھ بھیجتے ہو ہیں. جس حال میں بھی ہو خدا تو خدا ساتھ ان تمام اپنے دوستوں کو، ان تمام اپنے عزیزوں کو خدا کے نام میں اے خدا تیری حضوری میں لے کے آتا ہوں، تیری حضوری میں رکھ دیتا ہوں. اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر خدا اور شفا دے. کمپلیٹ چاہتا ہوں یسوع کے تمام نام ایونجلسٹ کے ساتھ ہو، تمام میں. کو برکت دے. بیماریوں کو باندھتا ہوں، ان کے دلوں کو باندھتا ہوں یسوع کے نام ہو میں. رہی ہے، ہونے والی ہے. کینسر ختم ہو جائے یسوع کے اولاد نام ملے میں. خدا ہمارے ساتھ میں یسوع کے نام میں خدا تو کسی گناہگار کے علاقے یسوع کے نام میں. یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک ضعیف اور انسان کی توبہ تک ہاللویہ. بخشتے کہ لوگ خدا توبہ کرے. خدا روزے رکھ رہے ہیں، خدا تو نے کبھی مانتا کر یس ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. بابا بایا لارا ٹھیک کا سنتو خدا ایک یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. خدا ان کی ستائش ہو، خدا ان کی ستائش ہو، خدا ان کی ستائش ہو، خدا ان کی بزرگی ہو. خدا ان کے جلالی نام کی ستائش ہو، اسی کی تعریف ہو جو دعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا خدا ہے. ہمارا خدا سنتا اور جواب دیتا ہے. وہ صرف سننے والا خدا نہیں، وہ سنتا اور جواب دیتا ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں. ہمارا اب پچھلے ہفتے پاسٹر اعجاز الہی نے کلام کیا تھا. خدا کے کلام میں سے جو کچھ بتایا تھا روزوں کے متعلق، تو جو سب سے اہم بات ہے روزہ رکھنے کی، روزہ اور دعا جو ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. روزے کے دعا کے بغیر روزہ جو ہے اپنی جان کو دکھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ خدا کی نزدیکی میں ہوں، اس سے بات چیت کرے، اس سے سنے اور سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مصیبت میں ہم روزے رکھتے ہیں، مشکلوں میں روزے رکھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. گناہوں کی معافی کے لیے روزے رکھتے ہیں. تو بہت سی مختلف وجوہات انہوں نے بتائی تھی جن کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں. اور یہ کہ دعا کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے صبح 5 منٹ ہو گئے دعا کے تو چلیں باقی سارا دن جو ہے وہ ختم. وہ پولس رسول کہتے ہیں پرے سیزلیسلی، بغیر رکے دعا کرتے رہو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، ہر وقت ہمیں دعا کی حالت میں رہنا ہے. اور روزہ جو ہے بے مقصد نہیں، با مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ جو اپنی راہ سے بھٹکے، اگر وہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو حلیم کرے تو میں ان کے ملک کو بحال کروں گا. یہ بحالی کے لیے، ہماری پرسنل بحالی کے لیے بھی روزہ ہوتا ہے. تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، نوما شیخ کے لیے، جو آج ہم سے ہم کلام ہوں گی. ان کا جو عنوان ہے آج وہ ذرا روزے سے مختلف ہے. یہ نہیں کہ بہت مختلف ہے، لیکن پہنچتا وہیں پہ ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اور وہ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کر رہی ہیں آج، کیا بتا رہی ہیں، تو ان کے جو الفاظ تھے وہ تھا ریپوزیشننگ ourselves in front of Jesus, before Jesus. خدا کے سامنے اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا، یا اپنا سمت یا رخ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی طرف موڑنے کا. تو ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ عامر صاحب ہمارے لیے ساتھ پڑھیں گے. پہلا ہے خروج 34 5 سے لے کر 7 آیت تک. نوما آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم
दरखास्त करेंगे अभी नैयर साहब से कि वो दुआ करे नोमा बेटी के लिए कि खुदा जो कलाम उसने दिया है हम तक पहुंचे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। आए खुदावंद कादर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के वसीले से तूने हमें फिर एक दफ़ा इकट्ठा किया है। वो हम दूर दूर बैठे हुए हैं लेकिन तेरे हुजूरी में इकट्ठे हैं। और खुदावंद अब जबकि तेरी खादमा तेरे कलाम में से ओ खुदावंद हमें तफसील के साथ पैगाम पहुंचाने वाले हैं, और पिछले अरसे में हमने रोज़े के मतलब सीखा, अब उसकी तैयारी के मतलब जब हम सीख रहे हैं तो खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाना ताकि हम तेरे इस कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बने, और अपने इस खादमा को तू बरकत देना, और खुदावंद इसके घराने को बरकत देना, और जितने भी और खुदावंद हमारे साथ शामिल हैं उन सब के एक एक घराने के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। और उन अजीजों के लिए जो खुदावंद हमसे बिछड़ गए इस मुल्क वबा में, तो खुदावंद उन सारे लोगों के खानदानों के लिए हम तेरी तसल्ली और तेरा इत्मीनान मांग लेते हैं। और जितने लोग खुदावंद बीमार हैं और या किसी तकलीफ में मुब्तला हैं या उनके साथ वो मुख्तलिफ ममालिक में जुल्म और ज़्यादतियाँ तेरे नाम के वसीला से हो रही हैं, तो खुदावंद हम उनकी मदद और रहनुमाई तेरे फरिश्ते के मांग लेते हैं ताकि वो उनकी मदद और रहनुमाई करें। खुदावंद आज जबकि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि तेरी आमद जो है वो बिल्कुल करीब है, तो हमें उस आमद के लिए वो खुदावंद तो हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाना ताकि हम तेरे सामने पेश हो सकें। बहसीयत इंसान हमसे जब भी कोई मुख्तलिफ खताएं और गलतियां हो जाती हैं तो हम खुदावंद तेरे हुजूर मुआफ़ी के तलबगार हैं, तो हमें माफ़ फरमाना। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद हम नोमा के होंठों का जुम्मा तेरे सुपुर्द करते हैं और नोमा को दावत देते हैं कि वो आए और खुदावंद के कलाम को पेश करें। आमिर आप पढ़ेंगे प्लीज हमारे लिए खरूज 34 5 to 7। ये खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खरूज उसका 34 बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तफसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। खुदा बाप के जिंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर इसकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। Norma, Thank you, Auntie. hand over to you. Thank you so much. आप सबको मेरी तरफ से सलाम. Thank you for the prayers. Pastor ने जैसे कि आपको बताया कि obviously we are celebrating Lent and you know हम अभी बात कर रहे थे कि हर एक कलीसिया जो है वो they're actually you know praying and fasting at this time, and many Christians and denominations जो हैं वो अलग-अलग तरीकों से, पर लेकिन you know they're entering into this whole period of praying and fasting, and that's a really excellent thing to do. But some people sort of say कि actually ये जो अभी ये जो रोजे चल रहे हैं कि they're not biblical, and my answer to that is okay, they're not, but
वो उसका क्या फर्क पड़ता है. And 1,000 times हमें खुदावन को याद करने का एक मौका है. And this is the time that we can pray and fast, and we should pray and fast. In my walk with the Lord, I think some people know कि मैं एक मुसलमान background से हूँ, तो मेरे लिए जो रोजे थे वो एक फर्जी रोजे थे. जो हमारे मुसलमान बहन भाई करते हैं वो एक फर्जी रोजे हैं. And वो रोजे जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी गुनाहों की माफी के रोजे होते हैं. वो ऑलमोस्ट ये होते हैं, इनफैक्ट दे आर कि जी वो रिपेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ये रोजे रखेंगे, ये जो एक महीना उनको मिलता है रमजान का, they will do everything in that week, और फिर अगले जो पूरे जो 11 महीने होते हैं उसमें जो आप जो कुछ भी कर लो, इसलिए कि रमजान का मुबारक महीना जो है वो हमारे गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं. खुदा का लाख शुक्र है कि दैट इज नॉट हमारी मसीहियों का कॉन्सेप्ट रोजों का. एंड एक्चुअली जब आप एक मजहब से निकल के दूसरे मजहब पे आते हैं ना, and I'm using मजहब only in the context of just trying to explain, because मेरे लिए following Jesus is not a मजहब, it's a relationship. And जब वो चीज मिसिंग थी एज अ मुसलमान कि मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं थी उस वक्त with the God that I worshipped. पर लेकिन when you come into Christianity, you realize कि it's all about a relationship. So आज जो मेरा जो topic है, it is really, जैसे आंटी ने कहा है, repositioning yourself before Jesus, and that's a good reason to fast. So you can tell that I am somebody who believes in fasting, and in my first not very few, in fact a lot of the time जब मैं खुदा उनकी तरफ आई थी, मैंने हर किस्म का रोजा रखा. And my topic today does not tell you how to fast. It does not tell you कि जी किस वक्त शुरू करना है, किस वक्त खत्म करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना लंबा होना चाहिए. But I just want to tell you कि you know what, मैंने एक दिन का रोजा रखा है, मैंने 3 दिन का रखा है, मैंने हफ्ते का रखा है, मैंने महीने का रखा है, मैंने 40 days का रखा है, मैंने मुसलसल 80 days का रखा है. And I have fasted with water, without water, with no food at all, every single thing, because I truly believe कि so long as आपका दिल खुदावंद के सामने एक रोजेदार दिल है, and it is continuously in praying and fasting, जैसे आंटी ने कहा है कि prayer and fasting go together. भूख हड़ताल is not a roza. भूख हड़ताल means कि जी आप सुबह before sunset, before sunrise and sunset आप सिर्फ फाका मारे, that is not the concept of a roza. And हम सबको वो आयत पता है in Mark 19 जहाँ पे खुदावंद ने कहा था that जब when the bridegroom is still with them, दुल्हा जब उनके अपने शागिर्दों के साथ होएगा, they will not fast, but एक दिन आएगा when they will fast, and that is probably the most talked about ayat in this whole period. And it should be remembered कि actually ये खुदा का हुक्म है कि उन्हें कहा था कि we should expect to pray and fast. So for me, coming from that background, I do believe कि हमें fasting and praying करनी चाहिए, पर not necessarily इस वक्त. So for me, this topic is not about the fasting and praying in Lent. It is generally about how I choose to fast and pray. तो मैं अभी सबसे शेयर कर रही थी ऑनलाइन होने से पहले कि I just feel this is my heart talking, and I'm hoping that खुदावंद will bless you in this. But I just want to tell you of something that I did that was totally wrong, because coming from a दुनिया से आप जिस भी मजहब से आप बिलोंग करते हैं, even अगर आप पाकिस्तान में हैं and you've grown up in Pakistan, आपके इर्द गिर्द जो कल्चर होता है ना, वो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है. तो मैं तो फिर भी मुसलमान थी, बुरी मुसलमान थी पर मुसलमान थी. So मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट ये था कि रोजे से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं. And in a way, ayat है कि if you humble yourselves before the Lord, your sins will be forgiven. 100% that is there, but that was done pre Khudawand coming to the earth and pre his grace. So I sort of had this mixed up. तो मैं आपको एक वाकया बताने जा रही हूँ, and the context of it is not important, but लेकिन how you become muddled in your head, and we have to be very clear in our understanding.
तो वाकया ये था कि आई वॉज गोइंग ऑन मिशन टू इंडिया मेरी चर्च के साथ यहाँ पे लंदन में। तो मैं पाकिस्तान चली गई जल्दी ऑन द बेसिस कि मैं पाकिस्तान 2-3 दिन अपने खाला के साथ रहूंगी एंड देन आई विल फ्लाई टू बॉम्बे। बॉम्बे में वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वाज मीटिंग मी इन बॉम्बे, वो वहां पे रहती हैं। तो फिर हमने 2-3 दिन इकट्ठे गुजारना था बिफोर द टीम केम। सो मैं गई इन पाकिस्तान। तो वहां पे जब मैं पाकिस्तान में थी, आई हैड बीन फास्टिंग फॉर द मिशन। पाकिस्तान में भी आई वाज फास्टिंग फॉर द मिशन, बट समथिंग हैपेंड एंड आई रियली स्लिप्ड अप। तो वहां पे आई वाज सो ओवरकम कि या खुदाया ये क्या हो गया मुझसे, मैंने तो एक तरफ से गुनाह ही कर दिया ना तेरे सामने, एंड मैं जा रही हूँ ऑन अ मिशन। एंड आई वाज सो अपसेट कि मैंने एक तरफ से माफी का रोजा रख लिया, राइट। तो मैं जब इंडिया पहुंची तो मेरी फ्रेंड को मैंने, आई वाज लाइक यू नो, आई टोल्ड हर एवरीथिंग, कन्फेशन की मैंने कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो दैट ब्लेस्ड वुमन, उसने मुझे मेरी तरफ देखा तो मुझे कहा तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने खुदा के सामने मैंने रोजा रख लिया, तो मैं गुनाह की माफी करती हूँ। तो उस औरत ने मुझे आंखों में आंखें डाल के कहा क्यों? उसकी सलीबी मौत तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? Did you have to sacrifice him again in order to ask for forgiveness? Is it not enough for you that he died for you and forgave your sins? तुमने repent की? मैंने कहा जी मैंने repent की. He said then that's fine. Then he knows. And I was like, oh my gosh, of course. So the thing is कि we have to remember कि हमारी निजात is not from keeping a roza. Hamari najat is from his death, his crucifixion, and the reason कि आजकल के रोज़ों में we keep our eyes fixed on the cross to actually remember us that we are forgiven for our sins. All we have to do is ask the Holy Spirit कि जी हमें बताएं कि when we make an error, and it was an error, but it wasn't something where I'm going to lose my salvation over. And I am so blessed to know that there are people in my life, and I'm sure there are people in aapke bhi lives, who will put you gently onto the right track. But brothers and sisters, this is the whole point, कि हमारे रोजे जो हैं are very different from all of the रोजे हमारे बहन भाई जो रखते हैं, especially पाकिस्तान में, इंडिया में, या जो मुसलमान जो रखते हैं। मैं मुसलमान की इसलिए बात कर रही हूँ because I come from that family, I come from that background, so I can. And I'm not trying to put it down. हकीकत ये है कि हमारी salvation has got nothing to do with रोज़े. हमारी salvation has everything to do with God dying, Jesus dying on the cross, and our accepting that. उसके बाद जो कुछ भी हम कर ले, so long as we bow at his feet and say that we want to be forgiven, we are. That said, मेरा जो दिल था, जो खुदावंद में मेरे दिल में डाला कि खरूज के जो सेक्शन भाई आमिर ने जो पढ़ा उस पे जरा गौर करें कि आमिर भाई ने जो पढ़ा. Let me read it in English. 34, so Exodus 34:5-7 says, now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. पहली आयत जो है, now the Lord descended in the cloud and stood with him there. ये मूसा और खुदा की मुलाकात है. The Lord God Almighty stood with Musa there. And it's the first time, actually इस आयत में अगर आप देखें कि आगे जो आप पढ़ते हैं, it's the first time that Jehovah God describes who he is, describes his character. English में लिखा हुआ है, he's merciful and gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands. This is an explanation of his character, and he's revealing his character to his servant Moses. पहले ये था कि if you remember back, in Exodus, when he appeared to Moses, he said, I am. And he says, I am who I am. And aista Khudawand jo hai, he's actually revealing himself to his servant. But how did he reveal himself to his servant? His servant had to be positioned in such a place कि वो अलग में वो जाके he met God. ठीक है, God Jehovah asked him to come up to the mountain, but वो एक separation point था.
So when I'm talking about repositioning yourself, वो यही है कि अपने फोन बंद करें, अपनी सारी दुनियादारी की जो चीजें जो है उनको पीछे हटे. You know, we have to reposition ourselves so that we can hear God for ourselves. Agar Musa jo hai, he hadn't gone up to meet the Lord, do you think the Lord would have stood before him? I mean, mere ronte khade ho jate when I actually think ke, you know, Father God positioned himself, he stood before Moses. Now, that's what happens when we pray and fast. That's what happens when we make it a relationship. When we do it, not necessarily as a remembrance, हाँ ठीक है, that's absolutely right. Not because हम किसी चीज को हम ढूंढ रहे हैं, वो भी चीज है. पर लेकिन आंटी ने अभी जो ज़बूर पढ़ा था, ज़बूर 42, मेरी रूह खुदा की प्यासी है. Yes. मेरी रूह खुदा की प्यासी है. And that is exactly वो प्यास, वो भूख, वो सिर्फ खुदा can fill. आगे जो था, what was Exodus 34:29. उसमें ये है कि when Moses came down from Mount Sinai, तो Moses जब Mount Sinai से जब नीचे उतरे तो उनके पास 2 tablets थी जिसके ऊपर covenant था, जिसके ऊपर law था, जिसके ऊपर खुदा ने, you know, पहली वाली tablets पे तो खुदा ने खुद लिखा था. And his face was so radiant, so shining with the presence of the Lord, कि लोग उनकी चेहरे के ऊपर वो नजर नहीं डाल सकते, उनको ढांकना पड़ा अपना चेहरा. Now, लोग ये कहते हैं कि वो ढांकना इसलिए पड़ा कि वो कम होता गया. That's besides the point. The point is that when you come out of the presence of God, there's something different about you. वो सारी चीजें जो दुनिया की, you know, जो worries होती हैं, फिक्रें होती हैं, सब कुछ वो ढल जाती हैं because आपका focus जो है, it becomes on God. Now, that to me is what I believe it happens. You draw near. किसी ने कहा था कि you know what, आप रोजे में जब ठहरते हो तो खुदा आपसे ज्यादा, he will speak to you more. You know, when you're in prayer and fasting, your prayers get answered more. And actually, I don't believe that. I don't believe that Khudawand is drawing close to you because you're in a roza. What I believe is that aap roze mein jab theharte hain, you will hear the voice of God. God is always there. He says, I will never leave you and I will never forsake you. That means he's always exactly here. Hum jo hain, हम दूर हो जाते हैं खुदावंद से. हम जो हैं हम पीछे हट जाते हैं because हमारा फोकस जो है वो काम पे ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, टीवी के ऊपर होता है, you know, व्हाट्सएप के ऊपर होता है, 1000 चीजों के ऊपर होता है. जब आप रोजे में ठहरते हो, सही रोजे में आप ठहरते हो, आपका फोकस जो है वो खुदा के ऊपर हो जाता है. And you then can hear what he has to say. And आप उस वक्त, because you're taking that time out, because you're sanctifying that time, you pray more, you are diligent. आपकी जो without आंटी ने जो अभी कहा था, without ceasing आप जब pray करते हो, वो आपकी जो it's not a रटी रटायदा, आपकी पूरी दिल की उभार जो है वो बाहर आती है. And God will answer that because you are there, you're there to hear what he has to say. पर लेकिन हम अपनी लिस्टें जो हैं वो खुदा के सामने हमेशा रखते हैं, and we sort of should. पर लेकिन I don't believe कि हमारी हर दफा ये लिस्ट होनी चाहिए. I do believe कि repositioning with God means कि खुदावन give me more of you. वो अगर वो जो ज़बूर 42 है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, तो हम ये नहीं कहते खुदा मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मुझे गाड़ी भी दे, मुझे ये भी दे, मुझे वो भी दे. हर चीज जो है वो हमें खुदावन से मिल जाती है जब हम खुदा के सामने आते हैं. मैं आपको ये नहीं कह रही बिल्कुल कि आप अपनी दरखास्तें जो हैं वो खुदा के सामने ना डालें. मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अगर कोई चीज जो है वो आपने you know, आपको पता नहीं लगता कि क्या करना. इनफैक्ट नया आतनामा में ये भी लिखा हुआ है कि जब डिसाइपल्स ने चुनना था बारनबास को और पॉल को, उन्होंने प्रेयर एंड फास्टिंग के साथ उनको सेपरेट किया. सो दैट इज अ लाइफस्टाइल ऑफ फास्टिंग. आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट वन एस्पेक्ट बिकॉज ये टॉपिक इतना गहरा है कि
to do it justice, हर एक बंदे को जिसने share करना, they have to share different aspects of it. So forgive me अगर आप expect कर रहे थे कि ये पूरी, you know, teaching it. This isn't. This is about the thing that is the most important to me, which is why I fast and pray. Why I feel fasting and praying is very, very important. He will never leave us and he will never forsake us. His plans are not my plans all the time. हम सिर्फ खुदा के कदमों में जाके हम सिर्फ उनसे दरखास्त कर सकते हैं, but keeping our eyes fixed upon the Lord himself. If I turn to my next reading, Amr bhai आप जरा Matthew पढ़ सकते हैं please? Hello? हाँ जी, Matthew 6:33. खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी. Exactly. So अगर हम रास्तबाजी पहले तलाश करें, everything else will be added. मैं यही कह रही हूँ. Everything else will be added. So this for me is something, let me just ask you the same question. कि क्या हम इन रोजों के दिनों में खुदावंद के सामने, खुदावंद के कदमों में आके उनसे पूछ सकते हैं कि खुदावंद, I don't want anything, I just want you. मैं तेरी sacrifice अपने सामने रख के I just want more of you. कि अपने दिल को खाली करके we just spend time seeking God himself. And I tell you, brothers and sisters, कि जब हम ये करते हैं, दूसरी सारी चीजें जो है ना वो literally ढल जाती हैं. They aren't as important. वो जो एक you know हमारे दिल में वो होता है ना कि जी हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, oh my God ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. आप focus जब खुदा के ऊपर करते हैं ना, everything else it still remains there. ये बात नहीं होती है कि वो miraculously खत्म हो जाता है, पर ये होता है कि they don't seem as important, या उनकी जो होती है ना, जो तलब होती है कि हमें अब ये करना, हमें ये, वो पैनिक नहीं होती, because he is the Prince of Peace. So if we remember कि जो अभी शुरू में जो था recap में कि Moses went up into the mountain and God stood before him, and this has happened to me personally so many times कि I go in dry, I come out full. I go in dry, I come out full. Full what? Filled with his Holy Spirit, full with his presence, full with understanding कि you know what, nothing in this life is as important. मेरा जो panic होता है वो ढल जाता है कि God, you know what, you've got this. My face might not shine like Moses did, because you know we know that nobody can look upon the eyes of the Lord and live. But actually Psalm 16:8 में लिखा हुआ है, I keep my eyes always on the Lord, and with him at my right hand I will not be shaken. I will not be shaken. What did King David mean when he said that? I keep my eyes always on the Lord. Musa couldn't keep his eyes on the Lord. Can any man keep his eyes on the Lord? Because Khudajab, when he appeared to Musa, he did it in the cleft of a rock. वो पत्थर के दरमियान जो एक क्या कहते हैं chasm था, उसमें आया था, and Musa could only see God from behind. He couldn't see his face. So what does David mean by I keep my eyes on the Lord? Well, to me, he keeps his eyes on the Lord because that's what I do in fasting and prayer. It's the face of Jesus. Ab bhale wo face of Jesus is something that is in your imagination or what you think it is, or it's a position that you take. For me, every time I pray to God, every time मैं सोचती हूँ खुदावंद के बारे में, मेरी एक picture होती है. And everybody has a different picture in their mind that खुदा के फजल से you can ask him कि मैं कहाँ हूँ, what is your face like? It's not about the face,
मुझे नजर खुदावन का फेस नहीं आता necessarily, पर मुझे ये होता है कि I am at his feet. That for me is the presence of the Lord. That for me is my eyes being fixed upon the Lord. जब मुझे ये पता होता है कि I am sitting at his feet and I know I am in the right place, then all things will pass away, because for me वही बात है कि I am, जो मत्ती में अभी हमें पढ़ा, कि I am keeping my eyes upon the Lord and I am seeking first his kingdom. ये आयत मुझे कभी समझ नहीं आई. To be honest, मुझे कभी समझ नहीं आई. लोग कहते थे keep your eyes upon the Lord, keep your eyes fixed upon the Lord, search you first the kingdom of earth and everything else will be added, of heaven and everything will be added. तो मैं सोचती इसका क्या मतलब है? How can you do that? I only had the revelation of it this year. This year, मेरा चौथा या 15वां साल है as a Christian, and it came to light this year. ये नहीं था कि मुझे उसकी समझ नहीं थी, but it became a revelation to me this year. बात ये कि we know the Bible, we understand उसकी आयतें, but in our journey on this earth, in our times of struggle, in our times of good and bad, there are different things कि खुदावन जो है वो हमें reveal करते रहते हैं. Through his grace and his mercy, there are different things that he reveals to us. And that was a revelation to me. What does it mean to seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and everything else will fall into place? Because I didn't pray and fast कि मेरी काम के लिए. I didn't pray and fast गाड़ी के लिए. Anything. I didn't. I was just, Lord, fill me with yourself. Fill me to overflowing with yourself. And I believe that जब Musa went to the mountain, he had all of the problems of the Israelites. वो मनमानी कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे. He was arguing with them. He was doing whatever. But God gave him his presence. To stand in front of Moses is something that I would be my prayer कि खुदावन तू मेरे सामने आके खड़ा हो ताकि I can just understand who you are. God revealed his character to Moses. That's what I'm saying. God reveals his character. So when I am asking for his presence and his righteousness, I'm asking to understand who God is. In what way does he fulfill all of my needs, all of my desires? And he explains that when we seek first the kingdom of heaven. That to me is why when we pray and fast without an agenda, sometimes, not all the time, sometimes, it is good to do that. मेरे लिए this is a really important thing. हमारी चर्च में हमें बताया गया है कि आपको regularly ये करना चाहिए. भले वो एक दिन का होए, भले वो हफ्ते में एक दिन का होए, 40 days का होए. Any way that you can, brothers and sisters, I would ask you, आपकी रूह खुदा के लिए प्यासी है? Are you able to pray and fast just for one day? Are you able to seek his face for 2 days? Are you able to seek his face even for 40 days? But are you able to hunger and thirst for righteousness? Because he says he will fill you if you do that. So my challenge to you is, koshish kariye, try and put everything aside. I'm sure people are doing it. This is nothing new. But instead of chasing the world, instead of chasing other things, just ask for more of him. I thank you for listening to me. God bless you. Can I just pray very quickly? Heavenly Father, I just thank and praise you, Lord. Glorify your holy and your precious name, Father. Father, who are we that you are mindful of us, Lord? Who are we, Lord, that you formed us from the very beginning, Lord, before even time and in our mother's wombs, Father God, that we can ask you to reveal yourself to us, Father. And Lord, you are so faithful that you do. You pour out your spirit, Father God, and you come to stand before us and reveal your face to us, Father God, just as you did to Moses, Father. Father, I thank you, Lord, for all of those brothers and sisters, Lord, who are listening, Father God, and for this ministry and for this opportunity, Father.
But Father, my heart cries out, Lord, just as we seek your face, Father God, that you would pour out your Spirit, Lord, upon all of those people who don't know you, Father God, all of those people who have turned away, Father God, all of those people, Father, who the enemy has captive, Father God, in every corner of the earth, Lord, even for my own family, Father. Pour out your Spirit to them, Father God, and reveal yourself just as you did to Moses and to Paul and to thousands and millions of other people around the world, Lord. You are the same today, yesterday, and forever, Lord. And we thank you, Lord, at this time as we remember Jesus, you're dying on the cross for us. We thank you, Lord, that our names are written on the palms of your hands, Father God. And as the nails went in, Lord, that they just became more alive, Father. We thank you for your plan, Lord. We thank you that we were part of your plan and salvation is ours and we don't have to fast and pray for forgiveness, Father. We thank you that it was done on the cross through the blood of Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Noma. Just to recapitulate, Noma ने आज जो हमें इतना अच्छा कलाम से आगाह किया है, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि रोज़ा जो है वो बिब्लिकल है, गो के इसकी कोई हमें तरीका नहीं बताया गया कि कैसे रोज़ा रखना है तो कैसे नहीं रखना, जैसे जैसे खुदा आपको गाइड करता है आप वैसा रोज़ा रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा खुदा दूर का खुदा नहीं है, वो एक रिलेशनल खुदा है, वो हमसे रिश्ता इस्तवार करना चाहता है। और फिर ये है कि खुदा के सामने हम्बल होने का एक तरीका है कि अपने रोज़ा रखे, अपने जान को दुख देना, ये हम्बल होने का तरीका है। और बार बार नोमा ने बताया कि माफ़ी तो हो चुकी सलीब पर, और अब कभी हमसे गुनाह और गलतियां सरजद हो जाएं तो we can bring it to him, but we can bring it to the foot of the cross. Yeah. Or the biggest thing is, in the presence of God, everything changes. He changes us, he changes our hearts, he changes our thinking. तो उसकी हजूरी में हम बदल जाते हैं, तब्दीली आ जाती है हमारे अंदर। और आखिर में जो नोमा ने कहा है कि हर रास्तबाजी की, खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में रहो तो बाकी सब कुछ ही will add on to it। जो दुनियावी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी बीमारी है तो आप दुआ ना करें, खुदा से ना पूछें, कतन नहीं। अपनी ज़रूरतें भी उसके सामने ही हमने रखनी है, और क्योंकि वो कहते हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम कभी इसका कतन ये मतलब नहीं कि हमने जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको मांगना नहीं। और डिसीजन मेकिंग में प्लीज मेक गॉड अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, क्योंकि जब जैसे नोमा ने बताया कि वो जब रसूलों का चुनाव कर रहे थे तो उन्होंने रोज़ा रखा और दुआ की, खुदा was part of that decision making। तो हमें भी जब भी कोई ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तो खुदा को बीच में शामिल करना ज़रूरी है। Thank you so much for this session. We give you thanks for being with us. Pastor Mahbub Ilahi, do you want to say anything? Yes, I will say in the last yes. सबसे पहले मैं मिसेस प्रवीण आलम का भी और नॉर्मा शेख का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हमने एक डिफरेंट एंगल से रोज़े की टीचिंग को हमने देखा है, जिसमें बताया गया कि वी मस्ट एक्चुअली रीपोजिशन योरसेल्फ with God, and this is what we need to do। क्योंकि अभी हम तरीक़ेकारी को भी देखेंगे आने वाले वक्त में रोज़े के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं बिब्लिकल।
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے روزے کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے جو فالس ٹیچنگز بھی جو ہے وہ منظر عام پر ہیں اور لوگوں کو مطلب مختلف طریقہ سے بتایا جاتا ہے. تو لوگ ہیں جو کہ ان کو سارے لوگ بائبل نہیں پڑھتے اور وہ تکیہ کرتے ہیں یا وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی پاسٹرز آتے ہیں جو چرچ لیڈر جو ہمیں بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے. بٹ the thing is بائبل میں جو ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وی ایکچولی جج all the spirits، جو بھی ہمارے درمیان کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، یا وہ ان کی سورس کیا ہے، کہاں سے وہ بتاتے ہیں. تو اگلے سنڈے ناظرین مسز پروین عالم جو ہے وہ اسی فاسٹنگ کے ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے اور اگلے سنڈے ہم ان کی زبانی بھی سنیں گے کہ وہ بائبل میں ہمیں جو وہ کس اینگل سے سکھاتی ہیں. اور پروین عالم جو ہے وہ اگلے سنڈے جو ہے وہ سرمن شیئر کریں گی، ہم ان سے بھی سیکھیں گے. تو جتنے بھی ہمارے ساتھ جو ویورز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ملتی بھی ہے، اور جو نہیں بھیجتے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی جو فیڈ بیک ہے وہ دیا کریں تاکہ ہم اپنے اس چرچ سروس کو ہم جو لائیو کرتے ہیں اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں. چونکہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں ڈسکشن کرنا تو اس وقت تک تو کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. آپ بتائیں گے اگر کوئی آپ کا ٹاپک ہے، سوال ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں جی کہ ہم بات کریں یہاں پر لائیو، تو آپ لکھ کر بھیجیں، ہم ضرور کریں گے. تو ساتھ ہی ساتھ ایک ویور ہے جس کا نام میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، جو کہ ہم کبھی بھی کسی ویور کا نام جو مینشن نہیں کرتے، انہوں نے ایک کویشچن بھیجا تھا. یہ مت سوچیں کہ میں نے اس کا آنسر نہیں کیا تو کروں گا بھی نہیں. وہ کویشچن یہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیوں کیا، جبکہ وہ خدا ہے، وہ کوئی اور راستہ بھی نکال سکتا تھا. تو اس نے بیٹے کو ہی یہ مطلب قربانی کے لیے کیوں چنا. تو اس کا جو ہے ہم اس کے نزدیک آ رہے ہیں اس ٹاپک کے، کیونکہ ابھی جو روزوں کا ٹاپک چل رہا ہے تو ہم آگے جب یسوع مسیح کی کروسیفکیشن پر بات کریں گے تو میں اس بھید کو کھولوں گا کہ why actually God killed his own begotten son, you know, to justify our sin basically. جو گنہگار تو ہم ہیں تو مار تو ہمیں پڑنی چاہیے تھی، سزا ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو why God actually choose to kill his own son. تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال آیا بھی ایک مطلب ہندو بیک گراؤنڈ سے لیڈی ہے جنہوں نے کیا ہے. ہسبینڈ ابھی مسیحی نہیں ہے، دے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ، اس کے ہسبینڈ مسیحی ہیں لیکن دے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ بوتھ آف دیم. حالانکہ وہ اس کا ہسبینڈ بھی مسیحی ہے لیکن دے بوتھ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی کیونکہ ان کے جو خدا ہیں ہندوؤں کے وہ ڈفرینٹ کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ جو ہے وہ باتیں ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ڈفرینٹلی ڈیل کرتا ہے اپنے لوگوں کو. اس لیے اس کے بارے میں ہم بات ضرور کریں گے. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے میں بولتا نہیں ہوں، وہ میرے یہاں لسٹ پر لکھا ہوتا ہے اور ہم اس کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم ضرور اس سوال کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی پریئر ریکویسٹ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو اگلے سنڈے تک کے لیے ہم وہ آپ سے چاہیں گے اور اگلے سنڈے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقت جو ہے 3 بجے تک ہم ختم کرنا ہوتا ہے، 11 منٹ ہو گئے ہیں اوپر. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. تو آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ لکھ کر اوکے. God bless you and see you God next. bless you all. See you next week. God bless.